I'm standing in front of RESQ Charitable Trust, which is one of the key NGOs who stepped up to rescue animals during the floodings in Pune. It is not just the residents of Pune who have been dealing with the constant rains, but also the animals have been greatly affected by it. This NGO has stepped up to guarantee their safety during this time of crisis. We had a lot of calls regarding wildlife as well as domestic. So our priority is always wildlife, but we cannot turn our eyes from saving other animals. So we had all the equipments with us anyway. So we thought, since we are in the flood, so we'll rescue all the animals whichever we are getting. So our priority was to save all the animals in the flood. So we started rescuing we have raft, we have boat, everything. So we started with that. यावर्षी जास्त पडलेला होता, त्यामुळे धरणं खूप पटकन भरली आणि त्याच्यामध्ये खडकवासला किंवा इतर धरणातून पाणी सोडलं जाणार आहे याबाबत आधीच सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे पुण्यामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होईल याची खात्री आपणास होती. आता आपण बरेच दिवस मांजामध्ये अडकलेले पक्षी याच्याबद्दल काम करतो. तर फायर डिपार्टमेंट जे आहे अग्निशामक दल ते आपलाच नंबर प्रत्येक वेळेस देत असतं. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम जो एडिशनल हेल्प लेते हैं, जैसे रेस्क्यू है, कुछ एनिमल फ्रेंड्स है, स्नैक फ्रेंड्स है, इन लोगों से एडिशनल हेल्प लेते हैं. उनके पास कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरा है, ड्रोन है, तो टू आइडेंटिफाई लोकेशन एंड एनिमल, तो वो हमें हेल्प मिलती है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है. तो वो सपोर्ट लेके साथ ही साथ कभी उनको एनेस्थीसिया देना पड़ता है एनिमल पकड़ने के लिए, तो वो भी उनके पास वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं. तो ऐसे एडिशनल हेल्प के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं बाय टेलीफोन, बाय मोबाइल उनसे कांटेक्ट करते हैं. उनके नियर बाय जो भी टीम्स है इनिशियली वो डिप्लॉय कर देते हैं और फिर अपने पूरा रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ उनकी टीम साइट पे पहुंच जाती है. We almost there were for 2 days and we rescued more than 70 dogs plus wildlife. As Pune recovers with the recent flooding, the RESQ Charitable Trust continues its mission to save pet and wild animals. This is Shrishti Kamal with camera person Abhijay Raj Vash reporting for SIMC.